What is this place? Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been deceived. Why are there people up ahead? If you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate! Settle down. That was Forget quick. All right. That was quick. Bring it! Come on! Show me your courage! Into the wind.
This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Follow the wind. All right, let's finish this fast. One with nature. Into the wind. Found your head. Propagate! That hurts. The wind knows me. Time to go. Scatter! Yes, you are. I'm good. Yes, you are. The door's closed here too. Where should we go now? The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. All right, let's keep going.
You got here quick. Impressive. Nechka's up there! What are you planning to do to her? I never lied to you. All this time, I've only been trying to save my daughter, even though she's not my daughter yet. But once everything is over, she will really become my Nechka. What is she saying? Is she not Nechka? So you figured it out. I want to use memories to awaken my Nechka. She has stayed in the Night Kingdom for far too long. She's afraid of the dark and cold. I'm the one who made her stay there alone, so I must bring her back. Don't worry, Nechka. Mom hasn't forgotten anything. She has always remembered your name. I'm afraid so. Then, who's that girl lying up there? She's a child from my tribe. Her parents were killed in the same abyss attack. But wouldn't you know it, her birthday is the same as that of my Nechka. I raised her and took care of her for many years. I thought that taking her in would help me feel better. I was so happy the first time she was willing to call me Mom. But then, I suddenly felt very scared. Is she really my child? My child's name is Nechka. How could I be happy? My little Nechka is still waiting for me. As I said, I only want to bring Nechka back, even if it costs me everything. And now, the time has come for me to pay. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nechka's ancient name. Shilonin, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. It's no use. I've already set up the Blaze Gem inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. It's all thanks to your ideas. Now, the central inscription will finally become Nechka's ancient name. After Nechka returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. You're not gonna go up there, are you? There's a flaw in this engraving diagram. The weak point is almost about to activate. So on my mark. Don't worry, Nechka. Don't worry. Mom is here. 3, Mom will always be with you. 2, Wake up, Nechka. 1! It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nechka. Keep back! Those are distorted thoughts. In the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nechka, why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Telasoli, you're the one who twisted Nechka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse, in ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nechka. Always. And forever. Mommy, I
I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old births the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the land. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? Yes, but I still don't know your name. My name's Nepeka. It really suits you. Nepeka, I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. I saw Nechka and was speaking with her, but now, where did she go? Nechka? Nechka? Where are you? Answer, Mommy, please. Shilonen, you saw her too, didn't you? You saw my little Nechka. I felt her hands and hugged her. I was right. I was right. Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. All right, I'll start it again and Nechka will... Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was wrong. She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum. But I... Enough, Tlasoli! The person you summoned with the Blaze Gem inscription wasn't the real Nechka at all. You collected memories of Nechka from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nechka's condition? When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing colder and colder. What could they feel but abject pain and sorrow? I took those emotions. You absorbed those emotions into the Blaze Gem inscriptions and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nechka in her sickly state. What the real Nechka wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. All I wanted was to remember Nechka, to see her again. Nechka has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name. The one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But have you forgotten the true meaning of your own ancient name? My ancient name is Undugu. The immovable love between you and Nechka has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nechka her name, her first blessing. But now, you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nechka is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings... What blessings have I had since the day she passed? But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day. Every single day, I've hated myself. And ancient names, too. You think Nechka would have come to hate you?
Auntie, do you still remember the last words Nachka ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Shilonen, Nichka, Napecha can already stand now, so we made our way over. Thank you, Paimon and Miss Traveler. I'm fine, really. The real Nachka helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nachka, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. Come on, let's get out of here. But what about Tlasoli? Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. As for now, we can get away from the house and get some sun. After dealing with all of that, I'm completely out of energy. She's already planned out everything. Shilonen sure doesn't waste time. It's still so scary to imagine. Tlasoli wanted to turn her adopted child into Nachka, and she even nearly succeeded. Yeah, she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation instantly. Well, it's all thanks to Nempeka's resilience. She never gave up. If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed Auntie's plan so easily. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all either quickly whisked away by Tlasoli or simply refused to believe me. Even if I told them everything, Tlasoli would just blame my illness to cover it up. All she had to do was start to cry, and then the guest would try to comfort her, but completely forget about me. She would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around me would start talking. I would be so scared every day. If I wasn't able to get your help this time, I might have just given up. You have us now, Napeka. If anyone dares to hurt you again, the Traveler and Shilonen will send them flying! Yeah. Sorry, I just can't help it. You are already super brave, and you even managed to call Shilonen for help. Oh, you definitely found the right person. Shilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying.
She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help that I was able to pick up on the details. Without you, it would have been extremely difficult for her to communicate that she needed help. Tlasoli would certainly be more on guard if I tried to speak with her, and would probably have just kept Nepeka locked up in a room again. So we had a part to play too! But where did Tlasoli even get the confidence to try this scheme? Was she not scared that someone would realize that Nepeka wasn't Nechka? That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechka's past, but also actively erase people's memories of Nechka. It's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, then first you must remove the old painting. It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central inscription. Whoa, and you still took it? If it were Paimon, she would have thrown that thing away the first chance she had! Well, you can uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her actual motives. So you suspected her from the very beginning? Oh, no, she's my auntie after all. How could I have seen her as a villain from the start? The most I did was keep the possibility and a corresponding plan in mind, and it was just our luck that the worst case scenario actually happened. But now that I look back on it, we still managed to rescue a suffering child, even if that wasn't our original intention. Anyway, I think we've just about summarized everything and praised each other enough by now. Everything is finally over, and Nepeka can... So, what should I do now, Shalonin? You should do whatever you like, of course. No one's going to lock you up anymore. But I don't know what I can do. Everything I know is about Nechka. What she'd like to eat, which flowers she enjoyed, how she acted and spoke. I'm not her, but I can only be like her. I don't know, Shalonin. I just don't know. Oh, don't worry, Nepeka. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No one will force you to be somebody else again. But I no longer remember anything about myself now besides my name. What if I never remember my life and lose all of my past? I'm scared, Shalonin. What should I do? Oh, don't cry, Nepeka. Here, take this. I took some ore from Tlasoli's collection and made this as a mold. A Blaze Gem inscription! You can make them too? Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. I've engraved your name, Nepeka, on the top. This is your first blessing, the one you received from a pair of people who loved you with all their hearts. It has always protected you and stood over you. For all of past, present, and future, it's never strayed far. But I don't even remember the names of my parents. I don't remember anything. Huh. I won't make any big promises and say everything will return to normal. I'm not sure what kind of future you will face. I can only promise that no matter what the future holds, your name will never fade. This is a blessing given to you by a name engraver. You'll continue to grow and mature as a sapling sprouts upward and becomes a healthy tree. Your name is your starting point, as well as your guide.
Remember your name and everything you've experienced, and you'll know how to step into your future. I'll do my best. You can do it, Nepeka! Thank you all. Shilonen, Paimon, and Miss Traveler. If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax and take it easy. We're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. Oh, I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe first. Oh, come with me, Nepeka. Oh, gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. What would you like to eat? Huh? Oh, anything. I'm not picky. Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. Oh, and, one more thing. Happy birthday, Nepeka. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many. What I do... And as for the... Oh, and... Now, once all the Blaze Gem inscriptions stop working... Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, in her attempt to... Now, Nechka really is gone, but everyone is about to remember her. She's resting in my workshop. I contacted others from the tribe and told them the tribe hasn't responded yet, so I'm planning to take her in for now and teach her. But that's for another time. For now, she should just rest and sleep. After all, she's got a busy future ahead of her.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of... There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. The biggest one in history. Ad Astra. Ad Astra. Thank you for complete. Time to go. Come on! Show me your courage! Settle down! Let the mighty be humble! Fallen leaves, adorn my night! Don't mind if I do! Let's do this then! Silence! Yes, you are. I'm good. Qualified after all. One with nature. Time to go.
Into the wind. The wind knows me. Brings a smile to my face. Time to go. It's fine. Into the wind. Nice and spicy. Out the propagate. Bow your head. Silence! Abandoned property belongs to whoever finds it first, so it's legally yours now.
अर्शित मांडा, हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल आपके? The wind knows me. Time to go. तो फाइनली फॉर्ज कर दी है इसकी हमने जो इसका वेपन था वो हमने फॉर्ज कर दिया है। अब इसको स्विच करना पड़ेगा इसके साथ। जीमित पंडरानी, हेलो ब्रो, क्या हाल चाल है आपका? स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे ब्रो। अब ये भी मैक्स कर लेते हैं। लेवल 50 का हो गया ये। लेवल 50। ओ यार, अब लेवल 60 के लिए हमारे को लेवल 60 के लिए डोमेन खेलने पड़ेंगे। ब्रो फॉर्ज करना पड़ेगा आपको, मतलब वो करना पड़ेगा, फॉर्ज करनी पड़ेगी ना आइटम्स। पहले वो पत्थर ढूंढने पड़ेंगे तब जाकर आपको स्वॉर्ड बिलेट मिलेगा। जो इसी का वेपन है ना, देखो इसका बेस्ट लुकिंग वेपन है। आपको फॉर्ज करना पड़ेगा, उसमें जाना फॉर्ज आइटम्स में ना, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप न्यू हो चैनल पर तो चैनल को ब्रो लाइक सब्सक्राइब शेयर मार दो। कोई बात नहीं ब्रो। अब इसके थोड़े फाइंड करते हैं, यही है, ठीक है। वैसे मैच ठीक रहेगा, मैचिंग कर लेते हैं। आ जाओ ब्रो, मेरी यूआईडी आपको राइट साइड दिख रही होगी, 8902817110। ओ भाई, इधर पटाखे फूट रहे यार कुछ। कॉप मोड खेलना है साथ में तो आ जाओ। आपको मेरी यूआईडी राइट साइड में दिख रही होगी। Time to go.
वैसे हो सके तो ब्रो मेरा जो चैनल है उसको आप लाइक शेयर कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरा रैंक लो है, अभी आपके वर्ल्ड में नहीं आ सकता। ब्रो कॉप मोड खेलो ना, और मतलब अपना एडवेंचर रैंक बढ़ाओ, तब साथ में हम कॉप मोड खेलेंगे। पहले आप अपना एडवेंचर रैंक पुश कर लो थोड़ा, मतलब 40-45 तक कर लो, तब आप आ सकते हो। वर्ल्ड लेवल 8 है ना मेरा, तो आप वर्ल्ड लेवल 8, आपका शायद वर्ल्ड लेवल 3 या 4 होगा मेरे ख्याल से। तो जब आपको वर्ल्ड लेवल 5-6 तक आएगा ना, तब आप आ सकते हो मेरे वर्ल्ड में खेलने के लिए साथ में। बस यही है ब्रो, ग्राइंड करते जाओ और अच्छे अपना जो करेक्टर्स है उनको अच्छे से बिल्ड मारो। Are you here One to with play wind with and me? cloud. The more, the merrier. Bow your head. Look at me. Be sanctified. Let me amuse myself a little. Settle down. Wind strike! No longer. There you are, eavesdropper. Birds come. Bow your head. Blink. The systems Let the mighty be humbled. no longer. Are you? क्या नॉर्थ लैंडर स्वॉर्ड बिलेट नहीं है आयरन स्टिंग बनाने के लिए, वो कैसे मिलेगा? रुको ब्रो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो आपको पहले क्या करना है, मॉन्स्टेड आपको तो पता ही होगा, मॉन्स्टेड ठीक है। मैप में जाना है, इधर इस पॉइंट पर जाना है मॉन्स्टेड, जहाँ पर आप जहाँ अपना होमलैंड है ठीक है। मॉन्स्टेड जाना आपको, और ये देखो जहाँ पर ये डायमंड जैसा नहीं है बना हुआ, इसके पास से आपको स्वॉर्ड मिल जाएगी ठीक है। यहाँ पर ब्राउज आइटम्स में ये देखो नॉर्थ लैंड स्वॉर्ड बिलेट, यहाँ आपको मिल जाएगी। आपको ये स्टैचू ऑफ 7 अपग्रेड करनी होगी एनिमो की 225 कॉइन्स की है ये। तो अभी मेरे पास देखो 138 है, जब 225 कॉइन्स हो जाएंगे ना आपके पास, शायद होंगे 225 कॉइन्स, तो यहाँ से परचेज कर लेना, इसको एक्सचेंज कर लेना। यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, मोरा जो भी मेन है, पोशन मिल जाएगा, मेमोरी ऑफ रोविंग गेल्स, सीस अपना कॉन्सुलेशन बनाने के लिए, जैसे हमने मान लो एनिमो ट्रैवलर है आपके पास, तो उसका कॉन्सुलेशन बनाने के लिए पोशन मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ देख लेना ठीक है। चलो अब हम अपना जो मेन चीज है उसको करते हैं शुरू, लेट्स गो। ये ब्रो अगर आप सोल्ड आउट हो गया ना, बताओ क्या करो, आप अपना एडवेंचर रैंक अपग्रेड करो ना, एडवेंचर रैंक अपग्रेड करो, स्टैचू ऑफ 7 को अपग्रेड करो, अपना वर्ल्ड लेवल इंक्रीज करो, ग्राइंड करते रहो, अपनी EX XP बढ़ाते रहो, तब ये स्वॉर्ड आपके पास वापस आ जाएगी, तब आप इसको परचेज कर लेना। और
जो मतलब बाकी के और है ना, जैसे लियो है, लियो में जाके वहां पर भी एक बारी डायमंड वो जो होते हैं ना, जहाँ पर आपको चीजें मिलती है, एक्सचेंज करने पड़ते हैं, वहां पर भी एक बारी आप चेक कर लेना। ये स्वॉर्ड ऐसा नहीं मतलब एक बारी सोल्ड आउट होती है, ये वापस भी आ जाती है फिर से। या क्या पता आपने कोई और वेपन में लगा दी हो ये स्वॉर्ड, एक बारी चेक करना आप उसमें ना, फॉर्ज आइटम्स में जाना, मतलब उसमें जाना, फॉर्ज में जो हथौड़ा जैसा मार रहा होता है ना, उसके पास जाना, क्या पता ये स्वॉर्ड आपके पास पड़ी हो। Are you here to play with me? Settle down. The tides beckon. One with nature, as one with wind and cloud. Your interior. There you are, eavesdropper. Let me amuse myself a little. Blink into the wind. The merrier. The citizens shine no longer. अच्छा, काया के लिए आपने इस्तेमाल कर दिए, चलो कोई ना, आपको फिर वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर आपको अपना अपग्रेड करना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल वगैरह, तब ये स्वॉर्ड वापस आएगी अब तो फिर। या फिर कोई जरूरी नहीं मतलब यही स्वॉर्ड आपने देनी हो, आप कोई और स्वॉर्ड भी चूज कर सकते हो, बहुत सारी स्वॉर्ड्स है। या फिर थोड़ी मतलब देखो ना, विश में विश में आप पुल करो, यहाँ से आपको 4 स्टार की स्वॉर्ड्स मिल जाती है, जैसे सेक्रीफिशियल स्वॉर्ड मिल जाएगी, और भी बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे इवेंट्स आते हैं ना, इसमें आप पुल कर लिया करो, इसमें मिल जाती है स्वॉर्ड्स। और करेक्टर्स मतलब 5 स्टार्स के तो नहीं, 4 स्टार्स के करेक्टर तो मिल ही जाते हैं, तो इससे आप कर लिया करो, तो आपको और भी बहुत सारी स्वॉर्ड्स मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, जैसे ये है ना, देखो कितनी सारी स्वॉर्ड्स है, ये देखो ये वाली स्वॉर्ड्स भी है, लायंस बोर, ये भी बहुत स्वॉर्ड्स है, देखो वेन ऑफ फायर एंड थंडर इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट ओपोनेंट्स अफेक्टेड बाय पायरो और इलेक्ट्रो। जो पायरो और इलेक्ट्रो से मतलब वो अफेक्ट हुए होते हैं ना, तो ये 20% डैमेज बढ़ा देती है, मतलब जब भी हम अटैक करेंगे तो 20% ज़्यादा हिट होगा ओपोनेंट को। इसका रैंक 1 है, अगर इसको रैंक 5 करूंगा ना तो 80% तक ये डैमेज बढ़ जाएगा, तो बहुत आसान हो जाता है फिर। और भी बहुत सारी स्वॉर्ड्स मिलती है, जैसे ये हो गई लायंस बोर, ये भी सेम है, ये द डोकेंट असिस्टेंट, ऐसे ऐसे मतलब आपको पुल करने पड़ेंगे ना। और ये ग्रीन कलर की स्वॉर्ड है, रेन स्लैशर, बहुत सारी स्वॉर्ड्स है। कजुआ को दे रखी है, ओ अच्छा, तो बढ़िया है ब्रो, सेक्रीफिशियल स्वॉर्ड भी ठीक है। वैसे जो सेक्रीफिशियल स्वॉर्ड है ना, वो काया पर ठीक रहती है, वैसे अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, काया के लिए ठीक है सेक्रीफिशियल स्वॉर्ड। हाँ ब्रो, आयरन स्टिंग तो कजुआ के लिए है ना, कजुआ के लिए बेस्ट है आयरन स्टिंग। अगर अगर काया के लिए बोल रहे तो काया के लिए भी ठीक है आयरन स्टिंग, क्योंकि ये जो ये करेक्टर्स है ना, इनको एलिमेंटल मास्टरी चाहिए होती है। जैसे मेरे पास देखो ये है, ठीक है, तो इसको, ये मैं इसमें जाता हूँ आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है, तो इसको, कजुआ जो ऐसा करेक्टर है, इसको क्रिक ट्रेट और क्रिक डैमेज की ज़रूरत ही नहीं है,
ये इसके 0-0 भी होंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसको चाहिए एनर्जी रिचार्ज 50% तक, एलिमेंटल मास्टरी 1000 चाहिए इसके लिए। तो ये एकदम ठीक करेक्टर है ना कजुआ, तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए क्रिट रेट और क्रिट डैमेज इतना फर्क नहीं पड़ता इस करेक्टर के लिए। इसको सिर्फ एलिमेंटल मास्टरी चाहिए होती है, और साथ ही साथ और स्वॉर्ड चाहिए जिसमें एलिमेंटल मास्टरी हो, आयरन स्टिंग स्वॉर्ड। क्योंकि ये जो कजुआ ऐसा टाइप का करेक्टर है, इसको एलिमेंटल मास्टरी चाहिए होती है। और वैसा इसमें काया में काया का भी ऐसा ही है, मतलब सेम टू सेम। इसको एलिमेंटल मास्टरी की जरूरत होती पर इतनी जरूरत नहीं होती है, बस यही है। बाकी तो वैसे ब्रो बताओ आप, मतलब मेरे को ये बताओ आप कहाँ से मेरी स्ट्रीम देख रहे हो, कौन सी सिटी और स्टेट से? उधर भी आज फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, मतलब फायर क्रैकर फट रहे हैं, पटाखे पटूखे वगैरह। ओ अच्छा, अहमदाबाद से हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है ब्रो। उधर तो बड़े बड़े पटाखे वगैरह फूट रहे होने आज। उधर नीचे शहर में बड़े बड़े शहर है ना, तो उधर बहुत सारे मतलब फायर क्रैकर्स, तो आज तो फिर मोटा ही होगा, मतलब फायर क्रैकर सुबह से शाम तक। दिवाली तक तो अभी फायर क्रैकर्स ही है, फायर क्रैकर ही फटते रहेंगे। Let the mighty be humble. Are you here to play with me? The more, the merrier. Silence. Look at me. Just once. हाँ तब तो फूटेंगे ही ब्रो, तब तो बड़े बड़े फूटेंगे। आई लाइव इन हॉस्टल, तो कभी कभार कभी बाहर नहीं गया तो पटाखे का मालूम ही नहीं है। अच्छा मतलब आप स्कूल मतलब बचपन से आप मतलब हॉस्टल में ही थे? तो हॉस्टल से मतलब क्या बोलते हैं, घर भी तो आते होंगे मतलब छुट्टियों में, जैसे दशहरा दिवाली होली। Are you? Germinate! The more, the Settle merrier. down. Be sanctified. Clouds high, the birds call, one with nature. Let me in with assistance. Shine. Bow your head. Just कौन सी ब्रो, इसकी गेम की कि कोई दूसरी? there you are, eavesdropper. The tides beckon. The more, the merrier. As one with wind and cloud. You're toast! Assistance. Nice and spicy! Shine. No longer. Silence. Are you? Over here. Let me amuse myself. Look at me. Just इनाजुमा की क्वेस्ट अभी 1 घंटे पहले की करके आया स्ट्रीम पे।
अच्छा अच्छा, तो आप भी ब्रो लाइव स्ट्रीम करते हो? गेंशिन की आईडी दोस्त ने ले ली तो आज 2.5 साल बाद वापस दी उसने। ना ही खेलता था ना ही खेलने दिया टाइम टाइम तक। ओ अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बहुत पहले से खेल रहे हो ना गेंशिन? मेरे को तो ब्रो वैसे अभी मैं बताऊँ तो मेरे को तो वैसे 1 साल ही हुआ गेंशिन खेल के। 1 साल मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, 1 साल ही मैक्सिमम। Need to hire a duelist? बीच में बोर्ड्स आ गए थे तब छोड़नी पड़ी। अच्छा, कौन से किस में आप 10th की +2? ओ अच्छा, अभी तो मतलब कॉलेज में हो आप? सेम ब्रो, मेरा भी फाइनल चला है, फाइनल ईयर। Ready. Guess I'll post a condition at the. अच्छा मेरे को बताओ आप ब्रो, नेक्स्ट बैनर में बैनर जैसे आगे आगे भी आएंगे ना, तो उसमें आप किसको, कौन से करेक्टर को पुल करोगे? पायरो आर्कोन को, या फिर कैप्टन को, या फिर कोई दूसरे करेक्टर्स को? किसको आप पुल करना चाहोगे? आपको कौन सा करेक्टर मतलब आप करने वाले आने वाले टाइम में पुल? साई चैन, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे साई चैन। वैसे एक बात बताओ, सारे कर्स में ही हैं, सेम 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 सेम। इस लूप से इस लूप से ब्रो बाहर निकलना है, तो बाहर कैसे निकले इस लूप से? जो ये लूप है ना, इस लूप से बाहर निकलना है हमारे को, तो हम कैसे निकल सकते हैं इससे बाहर? आप ही मेरे को बताओ, क्योंकि सब ऐसे ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम ही सेम। तो इस लूप से बाहर निकलना है, क्योंकि जो मेन बॉस बैठा है उसको तो फर्क पड़ता ही नहीं है। मेन बॉस को एक बात बताऊं, मेन बॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे।
अरे भाई अनसक्सेस हो गया, अनसक्सेस हो गया, शिट। जोंगली वेंटी और चाइल्डी, ओ अच्छा, जोंगली चेंटी वाइडी। ब्रो कैन यू रिव्यू माय राइडन? ठीक है ब्रो, मैं करता हूँ आपकी राइडन का रिव्यू। आप मेरे को अपने चैनल का मतलब सॉरी मतलब वो भेजो मेरे को, आप क्या बोल रहा हूँ मैं, यूआईडी भेजो मेरे को आप अपने उसकी अकाउंट की, तो मैं आपका अकाउंट रिव्यू करता हूँ अभी। Today's recommendation is the steak. तो ठीक है, आपने यूआईडी भेजी है, मेरा भी कर दो साथ साथ। ठीक है ब्रो, करता हूँ मैं आपका भी। आपने यूआईडी भेज दी अपनी, तो आपकी, अरे मैंने अभी परसों पहले, मैं एक बार बताऊँ, मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, वो जो अभी न्यू नहीं आया लेटेस्ट, जिमित पिंदरानी ब्रो। मैंने अभी लाइव स्ट्रीम की है जो अभी लेटेस्ट आर्कोन क्वेस्ट नहीं आया, जिसमें वो भी है पायरो आर्कोन मावी का। आप मेरी स्ट्रीम मतलब मेरी स्ट्रीम मैंने उसकी पूरी स्ट्रीम की है कि वो भाई बहुत भयंकर आर्कन क्वेस्ट आया था, और उसमें इतना मजा आया ना। अब उसमें अबीस ने अटैक किया है नेटलैंड पर, 20 किलो वो मतलब वीडियो गेंशिन इम्पैक्ट वालों ने भी डाली है, तो मैंने उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम की है भाई। इतना मजा आया ना उसको खेलने में भाई। भाई कसम से आप एक बारी लाइव स्ट्रीम देखना मेरी जाके, मैंने लिखा भी उसमें, मतलब मावी का ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, तो देखना आप मेरी वो लाइव स्ट्रीम मैंने पूरी कर रखी है। नेटलन की लाइव स्ट्रीम ना, जो अभी न्यू आर्कोन क्वेस्ट आया उसकी, इस पर यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाके देखना आप एक बारी, बहुत मस्त है। 88649237 ठीक है। वाओ, साई चैन एडवेंचर रैक है आपका 57, वर्ल्ड लेवल 8 है, ठीक है। स्पिरिलिप्सिस 12/3, इमेजिनम थिएटर एक्ट 8, ठीक है। मेरे को आप स्ट्रांग लग रहे हैं वैसे साई चैन ब्रो, ठीक है ओके। मेरे को ये राइडन शायद C3 की लग रही है, मैंने ऐसे आइडिया तुक्का ही मारा मैंने। C3 की होगी ना ये राइडन, क्या लगता है आपको, कमेंट में बताओ। खाते खाते टाइम देखेंगे, खाना खाते टाइम देखेंगे, ओके ओके। तो डिटेल में जाते हैं हम। 60 और 196 हमारे को यहाँ पर क्रिट रेट क्रिट डैमेज दिखा रहा है, और एनर्जी रिचार्ज 275 भाई, वाओ। वेपन है, इसी का वेपन है एनगुल्फिंग लाइटनिंग, रैंक 2 कर रखा आपने। अटैक इंक्रीज्ड बाय 35% ऑफ एनर्जी रिचार्ज, यू कैन गेन अ मैक्सिमम बोनस 90%, तो रैंक 2 कर रखा आपने, लेवल 90 का वेपन है भाई। सही है यार, अभी रेडन आई थी ना शायद, आपने तो अभी इसको C3 किया होगा साई चैन ब्रो। आर्टिफैक्ट्स में देखते हैं हम, 55 क्रिट रेट है भाई, 146 क्रिट डैमेज है भाई, और 68% एनर्जी रिचार्ज है भाई। आपको मतलब सही सही आर्टिफैक्ट्स मिल गए हैं, एक बात बताऊँ मैं, आपको बहुत सही आर्टिफैक्ट्स मिल गए हैं। एक बार आपके आर्टिफैक्ट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। और HP क्रिट डैमेज 26%, क्रिट रेट 7%, क्रिट डैमेज मिला आपको इसमें भी, आपको क्रिट रेट 15% क्रिट रेट मिला आपको इसमें, ये भी सही है। क्रिट रेट क्रिट डैमेज इलेक्ट्रो डैमेज बोनस में भी, और एनर्जी रिचार्ज में भी क्रिट रेट और क्रिट डैमेज मिला है 13 और 20%। सही है आपकी, बहुत सही आपने राइडन को बिल्ड किया है भाई, 10/10 है आपकी राइडन को। C3 की राइडन है, टैलेंट्स 8 10 13 सही है यार। मैं तो ये देख रहा हूँ आर्टिफैक्ट्स आपको बड़े सही मिले हैं वैसे साई चैन ब्रो। क्रिट रेट क्रिट डैमेज ठीक है, पर ये जो डिफेंस है ना, ये बेफालतू में मिल जाता है, इसकी जगह एलिमेंटल मास्टरी मिल जाती, कितना सही रहता। बाकी तो सब कुछ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी डिफेंस मिल गया है, इसकी जगह एलिमेंटल मास्टरी मिल जाती। HP एनर्जी सही है। इसी का करना है कि बाकी कैरेक्टर्स के भी रिव्यू करने हैं? बाकी के भी कर दूं? बाकी तो ये C6 है, ये भी C6 है। अच्छा, आपको बहुत बारी पुल किया होगा ना आपने, तो आपको ये भी C6 मिला है, ये भी C6 मिल गया होगा। रेडन को पुल करते करते 4 स्टार कैरेक्टर और मिल गए होंगे लेवल 80 के नीचे। सही है ब्रो, 10/10। बाकी के कैरेक्टर्स आपने डाले नहीं, मतलब यही कैरेक्टर्स है ना आपने रखे, तो सही है वैसे। आपने बहुत सही बिल्ड किया कैरेक्टर्स, एक बारी मैं ये भी चेक कर ही लेता हूँ।
C6 है, आर्टिफिक्स 18। चलो ठीक ही है, बढ़िया है ब्रो, 10 आउट ऑफ 10 ब्रो। चलो अब करते हैं उसको अपग्रेड। मैं पहले ना थोड़ा इसको वो कर लेता हूँ। पांच, एक चाहिए अपने को और एक ये चाहिए लेवल। Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. वैसे सही किया था जो साई चैन ब्रो का जो अकाउंट मैंने रिव्यू किया, इन्होंने बहुत सही राइडन बिल्ड की है। इनकी मतलब मेरे को राइडन लग रही है कि 1 लाख से 2-3 लाख तक तो मैक्सिमम डैमेज आपकी राइडन शोगन दे ही देती होगी साई चैन ब्रो। क्या लगता है आपको? मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? 1 से 3 लाख के बीच में आपका राइडन शोगन तो डैमेज दे देती होगी, मतलब चारों करेक्टर्स को मिला के। ब्रो जो तो नेटलन का आर्कोन क्वेस्ट था ना, इतना सही आर्कोन क्वेस्ट था ना, मैंने उसकी पूरी स्ट्रीम की ही है। जो लेटेस्ट आया अभी गेंशिन इम्पैक्ट की तरफ से, जिसमें वो फुल गॉड पावर होता पायरो आर्कोन, तो उसकी मैंने लाइव स्ट्रीम की। आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना भाई, बहुत सही लाइव स्ट्रीम गई है उसकी। Time to go. Are you here to play with Settle down. Be sanctified. propagate? Look at me. Just once. Silence. Let me amuse myself a little. Scatter! The wind knows me. Propagate more. Bow your head. Resistance. वैसे अब लेवल 80 की तो हो जाएगी अपने कजुआ की स्वॉर्ड। इसको हम लेवल 80 कर देते हैं। वेपन्स में जाके आयरन स्टिंग, एलिमेंटल मास्टर 136। अब करते हैं हम इसको एनहेंस। ये हो गई अपना लेवल 80। चलो भाई लेवल 80 तक ठीक है, बाकी अब ये हमारे को फाइंड करने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, लेवल 80 का भी ठीक है, लेवल 80 तक हो गया। वैसे
इसके पास इन्होंने ये दिया है, इसको वैसे एलिमेंटल मास्टर की जरूरत है। और इसके पास थी सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड। वैसे मेरे को इसको देनी चाहिए। इसको कौन सी स्वॉर्ड देनी चाहिए वैसे, कौन सी ठीक रहेगी? एक है फेविनियस स्वॉर्ड, ग्रेट स्वॉर्ड, ये ठीक है। इसको स्विच कर लेते हैं इसकी तरफ, है ना, ये ठीक रहेगी इसके लिए। फेविनियस स्वॉर्ड इसको मिल गई है, और ये इसी की स्वॉर्ड है, ये भी इसी की स्वॉर्ड है। एक ये है, एक ये फेविनियस ग्रेट स्वॉर्ड, और एक ये ठीक है। रैंक 2 है ये ये वाली रैंक 2 की है ना, ठीक है। चलो ये तो ठीक हो गया, अपने को रीसाइन मिल गया एक एक्स्ट्रा, ये फायदा हो गया, रीसाइन मिल गया। 10 और 1 11। क्लियर मेमोरी, स्टॉर्मिंग टेरर 3 इन सिंगल प्लेयर मोड, स्टोर अपग्रेड टू द स्टैचू ऑफ द 7 वे टू लेवल 9। अरे लेवल 9 कैसे होगी ये? रचित वर्मा, हैप्पी दशहरा ब्रो, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। और बताओ कैसे फूट रहे हैं आपके एरिया में आजकल पटाखे? आज तो मोटा ही पटाखे फूट रहे होंगे आपके एरिया में भी। वैसे आ जाओ ब्रो, साथ में खेलते कॉप मोड। आपको मेरी यूआईडी दिख रही होगी 8902811710। ये खेलते हैं, मतलब डोमेन खेलते हैं साथ में। अगर कोई आना चाहे स्ट्रीम से तो आ सकते हैं। हम दगा रहे हैं सब कॉलोनी में। ओ अच्छा ब्रो, तब तो बढ़िया है, फुल पावर एकदम, पटाखे फटोके फोड़ो आज तो। अब तो दिवाली तक पटाखे होंगे सारे में, फायर क्रैकर जी। वैसे स्ट्रीम लैग तो नहीं हो रही है? लैग होती है ना बीच में कई बार, लैग तो नहीं हो रही है ना स्ट्रीम? वैसे बीच बीच में थोड़े एरर्स आ जाते हैं कई बार, तो लैग हो जाती है स्ट्रीम। मेरा चार्जिंग में लगा, अच्छा कोई ना ब्रो। लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं 1-1.5 घंटे की, आ जाना बाद में। अभी मैच ही कर लेता हूँ, टैबलेट से देख रहा हूँ। तो इसमें नहीं खेलते ब्रो आप? टैबलेट में नहीं खेलते हैं गेंशिन इम्पैक्ट को? टैबलेट में तो और सही चलती है ब्रो गेंशिन इम्पैक्ट भाई। एकदम फुल, मतलब एफपीएस ठीक वगैरह आते हैं इसमें। लैग हो रही है, स्ट्रीम लैग हो रही है? एक मिनट में चेक कर ही लेता हूँ पहले। स्ट्रीम वैसे लैग तो नहीं होनी चाहिए। अब अब बताओ मेरे को ब्रो, स्ट्रीम हो रही है लैग? अब मैंने ठीक कर दिया, अब बताना मेरे को स्ट्रीम लैग हो रही है? गवर्नमेंट वाला टैबलेट है। आईपैड नहीं, अच्छा गवर्नमेंट वाला टैबलेट है। ओ अच्छा, आपको मतलब क्या, मतलब स्कूल से मतलब कि कुछ ऐसा है कुछ?
The wind knows. Time to go. Strike a pose! Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Clouds high, the birds call. I am the cutting edge of fashion. Time to go. Into the wind. गवर्नमेंट से मिला है, कॉलेज से मिला है। ओह अच्छा। वैसे ब्रो मेरे को बताना, ये जो स्ट्रीम लैग वगैरह तो नहीं हो रही है बीच बीच में? One with wind and cloud. Into the wind. ये ना फिर से नेट जाने लग गया, ये स्कैम ही है कुछ चला हुआ। नेट अगर आज चला गया तो क्या फायदा भाई, दशहरे वाले दिन 5G एयरटेल इतना डम हो गया है ना। Into the wind. Wind strike. Clouds high. The birds call. इस बार डोमेन ने HP दी है, अटैक दिया है एक। इसमें चलो मिल ही जाएगा ठीक ठाक। अरे नहीं, बड़ी जल्दी वो कर रहे चैलेंज शुरू, बीच बीच होती है 1-2 सेकंड्स। यार ये इसी की यही दिक्कत है, ये इसकी वजह से ही होती है। नेट थोड़ा स्लो है ना इधर, इसी की वजह से होती है। बाकी तो ठीक है सब कुछ, कोडिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। ये नेट थोड़ा स्लो है। MBS मेरे को ठीक मिल जाए ना, 3-4 MBS पर सेकंड, तब जाके ठीक चलेगा। ये 5G एयरटेल भी डम हो चुका है। Time to go. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows. वैसे रचित ब्रो, आपने आर्कॉन क्वेस्ट कंप्लीट किया? वो मतलब वो वाला जो अभी लेटेस्ट आया है नेटलाइन में, आपको कैसा लगा भाई? मेरे को तो बड़ा भयंकर लगा नेटलाइन का आर्कॉन क्वेस्ट भाई। उसमें अबिस का अटैक हुआ भाई, बहुत सही था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम भी मतलब लड़ ही रहे इस बार सच में अबिस से। Time to go. हीलिंग बोनस, अटैक, HP, डेंड्रो डैमेज बोनस, डिफेंस। यार ये डोमेन का भी ढंग के देगा। क्रिट रेट, हीलिंग बोनस, HP, यही है। नेटलाइन का आर्कॉन क्वेस्ट भाई इतना सही था ना, मैंने उसकी पूरी स्ट्रीम की है रचित ब्रो। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पूरी लाइव स्ट्रीम कर रखी है मैंने उसकी, पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम। The wind knows. Fallen leaves, adorn my night. One with nature.
Winds knows me. Lend me a hand. As one with wind and cloud. Be sanctified. One with nature. Wind strike. क्या सब डे वन हो गया। अच्छा था, बस वॉइस ओवर गायब था कुछ करेक्टर्स का। हाँ, उसका क्या बोलते हैं, किनिच और किसका, उसका वो उसके साथ जो होता है डायनासोर जैसा छोटा सा, उन दो का करेक्टर, उन दो की वो जो वॉइस थी वो गायब कर रखी थी इन्होंने, क्योंकि वो थोड़े मतलब वो चाइल्ड वाले थे ना। मतलब इसके बाद जो स्टोरी थी वो सीरियस हो गई थी, बिल्कुल एकदम सीरियस वो चल पड़ा था ना, शुरू सीरियस स्टोरी शुरू हो गई थी, तभी शायद इस वजह से इन्होंने इन दो करेक्टर्स की वॉइस गायब की थी। एक कचीना की भी गायब की थी इन्होंने, क्योंकि थोड़े वो है ना, मतलब चाइल्ड टाइप है तो सीरियस हो गई थी, तब इन्होंने शायद क्या पता गायब कर दी हो इनकी वॉइस। वरना भाई क्या भयंकर आर्कन क्वेस्ट था भाई, मजा ही आ गया कसम से मेरे को। मतलब कसम से 1.5 घंटे की स्ट्रीम मैंने पूरी कर रखी इसकी, पूरे उसकी आर्क कॉन्क्वेस्ट की। तो बहुत सही आर्क कॉन्क्वेस्ट था। I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. इसने फोंटेन खोला ही नहीं है। ये फोंटेन है कि अच्छा हाँ, ये इसने खोला ही नहीं है। इसने सीधा नेटलैंड खोल दिया, नेटलैंड खोल दिया, ये बीच का छोड़ ही दिया। वाओ, फोंटेन खोला है इसने और बीच का छोड़ ही दिया। Let's go, Tomato. Time to go. Let the might
night! Have a seat. One with nature! Time to go! As one with wind and cloud! Into the wind! Clouds high, the birds call! I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals. Time to go! Time to go! One with nature! Fallen leaves, adorn my night! Into the wind! One with nature! I'm at the cutting edge of fashion. As one with wind and cloud! Into the wind! One with nature! इस बार इन्होंने दिया फिजिकल डैमेज बोनस। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा इंटरनेट ये थोड़ा स्लो हो गया, तो मैं अभी थोड़ी देर बस 5-10 मिनट आपसे बात नहीं कर पाऊंगा।
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will Inactivity continue to serves take no pride in purpose fulfilling my whatsoever. duties. अब मेरी आवाज आ रही होगी गाइस, मेरी आवाज आ रही है वैसे? एक बारी चेक कर लेना, आवाज आ रही है तो बता दो मेरे को, और स्ट्रीम अगर ठीक चल रही है, लैग ना हो रही हो तो बता देना गाइस। Clouds high. The birds come. Seems like an emergency. The wind knows me. Bow your head. One with nature. A bitter cup swallowed. One with wind and cloud. Taking a turn for the better. Settle down. Mind the side effects. Into the wind. Seems like an emergency. The doctor will see. Let the mighty be humbled. Fallen leaves. Adorn my night. That hurts. The wind knows me. Taking a turn for the better.
Time to go. One with nature. The tides beckon. वैसे गाइस अगर मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही हो तो मेरे को बता देना। तो बता देना ब्रो एक बारी कि कैसा लगता है यार। एक तो कमेंट्स में अगर मैं कमेंट्स देखूं तो यार ये फिर वही ये सेम टू सेम हो जाएगा। ये पता नहीं बीच बीच में क्लियर वॉइस क्यों नहीं आती है। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. आकाश संधू हेलो ब्रो कर दिया सब ब्रो तुम मुझे काम है। हेलो ब्रो आकाश ब्रो क्या हाल चाल है आपका? स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे ब्रो। हेलो ब्रो हम अभी कॉप मोड में मिले थे ब्रो। क्लियर आ रही है चलो बढ़िया है ब्रो, वरना बीच बीच में ऐसा होता है ना नेट उड़ जाता है, नेट उड़ जाता है बीच बीच में तो वॉइस ही क्लियर नहीं आती, कई बार वही नहीं आती है। थैंक्स आकाश भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोबारा ज़रूर खेलेंगे साथ में जब टाइम होगा तो पक्का हम खेलेंगे साथ में। मेरी यूआईडी दिख रही होगी आपको राइट साइड 8902817110, तो हम साथ में ज़रूर खेलेंगे। तो अभी हमने नेक्स्ट बॉस बैटल्स वगैरह करते हैं तो यही ठीक रहेगा। क्या बोल रहे हो ब्रो? नहीं मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब बीच बीच में थोड़ी मतलब वॉइस अटकती है, मतलब बीच बीच में क्लियर नहीं आती वॉइस, ये बोल रहा हूँ मैं। थोड़ी मतलब बीच बीच में ऐसा होता है ना, थोड़ी अटकती रहती है वॉइस, अटक कर चलता है बीच में, ये नेट की वजह से। बाकी तो सब कुछ ठीक है ना, नेट की वजह से कई बार गड़बड़ हो जाती है। Bow your head. Into the wind. Where evil lurks, shoot on sight. Done. अब सही है, हाँ अब तो ब्रो थोड़ा ठीक तो आ ही रहा होगा अब। यार ये तो अभी भी मतलब लाइव स्ट्रीम इस पे तो शो ही नहीं कर रहा है। मैंने तो यहाँ पर बंदे पे लिए, इस पे तो शो ही नहीं कर रहा वैसे, क्योंकि इधर तो शो होना चाहिए, या फिर ये मेरे को ही मतलब शो कर रहा होगा, या फिर क्योंकि मेरे इसमें करंट में तो मैं मतलब एनिमी को मार रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम पर ये अभी एक जगह खड़ा ही है। ये क्या चक्कर है? ये कुछ न्यू लगा मेरे को।
चलो हाँ ब्रो मैंने भेजी थी आपको, मैंने सोचा आपने एक्सेप्ट कर दी होनी रिक्वेस्ट। मैंने कर दिया आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट टाइम जब खेलेंगे ब्रो तो साथ में खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा यार। वैसे जो इस बार इन्होंने जियो करेक्टर दिया ना, ये कुछ मज़ा नहीं आया। जियो करेक्टर होना थोड़ा पावरफुल चाहिए, वैसे मज़ा तो बहुत आया है पर वैसा वाला नहीं आया जैसा होता है ना, तो ठीक ही है। नेक्स्ट उसमें पुल कर ही लेंगे किसी न किसी को। पर ये मैं देखूँ तो लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा लेट आ रहा, पता नहीं क्यों थोड़ा लेट आ रहा। थोड़ा ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी आता है तब ठीक होता है। One with wind and cloud. Propagate! Silence! Let the mighty be humble! Into the shadows. Enough! Settle down! Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it.
I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it.
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it.
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it.
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties.
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Water comes in many discerning that once is crisp and pure, and enduring. The water is like any other. So a rich and it must be beautifully created. I see my word, but I also see all the people of Fontaine. I want you to take pride in these. They are beautiful creatures. They are proud. Be sure to cause them no harm.